Namaste. We are extremely excited to bring to you Eat Right India initiative of FSSAI adopted by Herbalife Nutrition in Karnataka. Herbalife is all committed to make the state healthy and safe in their series of this initiative. And acknowledging our broadcasting digital partners, the very famous and eminent, the Mitro app. And together, we would like to extend a very warm welcome to our guests today. But before that, let me give you a brief write-up on what it is that we celebrate today. According to Ayurveda, all good health starts with diet and digestion. Accordingly, one of the most important things that you and I can do for our health every day is that we eat wisely. Food is considered a very powerful medicine, and children are powerful change engines. जिनके पास स्वास्थ्य है, उनके पास जिंदगी है, उनके पास आज की डेट में पैंडेमिक के चलते सब कुछ है. So today we will discuss naturopathy, healthy and sustainable diets. It is my pleasure to welcome amongst us Dr. Anant Biradar, National President of the International Naturopath Organization, Ministry of Ayush, Dr. Gurmeet Singh, Professor, Head Center of Ayurveda Biology and Holistic Nutrition, Transdisciplinary Health and Sciences and Technology. He's also an inventor, scientist, innovator, and entrepreneur par excellence. I would also like to welcome Dr. Jitendra Arya, somebody who's got over 40 years of experience in naturopathy. He's indeed a wellness expert and has always cured things like Anant Biradarji in the fields of naturopathy. A system that is alternate, that is aligned with the dimensions of yoga. After all, what is yoga if not a science of life? It is a privilege and pleasure to be having all of you. My first question to you, Dr. Anant, what are the key steps of nutritional self-reliance? Agar hum naturopathy ki baat kare, how is diet as a medicine in naturopathy? Ji. I am into nature cure since 25 years. And I have lots of experience with patients and various people. And being an international naturopathy organization, we use and try to promote natural diet, prakritik ahar, uncooked food. What is the benefit of uncooked food? Raw food. प्राकृतिक चिकित्सा में आहार का बहुत बड़ा महत्व है जी. प्राकृतिक चिकित्सा में आहार को औषधि बोलते हैं जी. और इसी दिशा में प्राकृतिक चिकित्सा में हम काम करते हैं. आप एक बार विचार करिए, आहार ये आरोग्य का अनिवार्य और आवश्यक अंग है. इट इज इंटीग्रल पार्ट एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी. तो इसीलिए आहार का महत्व जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बीमारी से बचने और स्वस्थ रहने के लिए आहार को समझना अनिवार्य है. अगर व्यक्ति आहार को नहीं समझेगा तो कई बार वो बीमार पड़ सकता है. कई बार उस व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि आहार के कारण हमारे शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं. इस संसार में नेचर ने हर प्राणी को भरपूर आहार दिया है. चाहे वो एनिमल हो, व्यक्ति हो, किसी भी प्रकार का जीव प्राणी है, हर व्यक्ति को ईश्वर ने या प्रकृति ने भरपूर अन्न दिया है. और कभी भी उस अन्न का कमी नहीं होता जी. लेकिन व्यक्ति गलत आहार के कारण, गलत लाइफस्टाइल के कारण व्यक्ति अनेक बीमारी को आमंत्रित करता है. हम प्राकृतिक चिकित्सा में यही सिखाते हैं, हाउ टू ईट, व्हेन टू ईट, वेयर टू ईट. ये बहुत जरूरी है. आजकल ये फास्ट फूड के चक्कर में पेरेंट्स भी भूल जा रहे हैं. तो हमें आज आवश्यकता है, क्योंकि आहार का व्यक्ति के आचार विचार व्यवहार में बहुत गहरा संबंध है.
intertwined, interlinked, as you said. Food is connected to our thoughts, our internal well-being. And as we Yeah. celebrate this year as a year of well-being and yoga, my next question to you, Dr. Gurmeet, thank you so much for joining us today. What do you feel about the nutritional landscape of India? How do you think it's important to eat right? And I'll add one more question here with your permission. Sir, do you think everyone in India can afford to eat right? Yeah, I think you've raised some very important questions. Nutritionally, what is the right nutrition, right? And second, can everybody get it? No, is it practical for everybody to get it? So I think there are two extremely important questions. So पहला चीज तो अगर देखे तो I look at food from 5 principles. Firstly, as Biradar ji ने बोला, no, there are 3 main elements to food: ahar, vihar, and aushad, right? Which is diet, lifestyle, and medicine. While aushad becomes on the curative side, ahar and vihar are preventive side. There's a very interesting shloka in Ayurveda which talks about if you're taking medicine, the curative part, no, so no medicine will be effective unless the food is right. और उसका एक corollary भी है, which is कि अगर food is right, then no medicine is required, right? So that is so important, and that's why we call it a holistic system, because the curative part, aushad, is complemented by the ahar and vihar, the preventive part. आज की डेट में we have invested a lot. If you look at public health, पे हमारा expenditure about 1.3% of GDP, about $40 billion per year, right? Most of it is going on the curative side, which is when we fall ill, hospital network hai, doctors hai. I think it needs to be complemented by the preventive system, which our traditional knowledge systems such as Ayurveda, Siddha, Unani, they emphasize. And diet plays a big role in there. Well, there are 5 principles that we look at from a diet perspective. पहला है कि for nutritionists आपने बोला तो एक तो है कि we should have a balanced diet, right? And balanced diet आज की डेट में हम कहते हैं कि it has to be balanced between proteins and carbohydrates and fats. Equally from an Ayurveda perspective, the rasa balance should be there. जो 6 रस हैं, right? I call them malt KK, Madhur, Amla, Lavan, Tikta, Kattu, Kashaya, right? Which is sweet, salt, sour, bitter, and 2 unique ones, which is why they are not exactly taste. Na? Rasa hai, thode farak ho jate hai, because Kashaya is astringent and Kattu is pungent, right? So these things have to be there on every plate, and each of these have a very unique function in the diet to call it a balanced diet. Second principle is the principle of moderation, right? Which is कि हमारे को खाना moderation में खाना चाहिए. And there are a number of Ayurveda shloks also which talk about moderation, right? And moderation is now linked with longevity. अगर आपका metabolic load आप overload कर लेंगे खाने के साथ, though then your life is shortened and your health is also, right? So you have to look at moderation as a second principle. Today we are talking a lot about intermittent fasting and fasting, etc., which is building on those concepts. वो हर religion में बताता है, रोजा हो चाहे fast हो. Correct, right? Yeah. तो ये principle हुआ हमारा moderation का. Third principle है diversity का, कि एक ही चीज से नहीं काम बनता. हमारे प्लेट में कितना diversity है, कितनी अलग-अलग चीजें खा रहे हैं, वो बहुत important है. I always, when people come to me, I'm a researcher, right? So I keep a count of कि how many species am I eating in a week? How many species, different species? क्योंकि जितना अलग-अलग species खाएंगे, जितना phylogenetic diversity बोलते हैं, right? उतना ही आपका food ज़्यादा अच्छा है. अगर विटामिन सी चाहिए, पहली चीज तो फूड फर्स्ट होना चाहिए, rather than, है ना? दूसरा, अगर खाली ऑरेंजेस से विटामिन सी मिल रहा है वर्सेस आप 5 अलग फ्रूट खा रहे हैं जिससे उतना ही मात्रा में विटामिन सी मिल रहा है, तो 5 अलग फूड इज बेटर देन 1, राइट? सो ऑयल एक मत यूज कीजिए, 5-6 अलग ऑयल यूज कीजिए. सीरियल ग्रेन्स एक मत यूज कीजिए, खाली राइस और व्हीट मत यूज कीजिए. दे कैन बी योर स्टेपल ग्रेन्स, राइट? लाइक आयुर्वेदा हैज दिस कांसेप्ट ऑफ नित्य सेवनीय आहार. यू कैन हैव देम एवरी डे, बट यू आल्सो हैव 3 मील ओकेजन्स एवरी डे एंड ट्राई हैविंग 6 अलग अलग टाइप के मिलेट्स है हमारे पास, तो 3 मेजर 3 मिलेट्स, वो सब इंट्रोड्यूस कीजिए, ओट्स इंट्रोड्यूस कीजिए. सो एक्सपेरिमेंट विद फूड
Don't stick to one. So that's the principle of diversity, which has to be there. Third, of course, is this principle of avoidance, which I bring from modern science, which is कि salt कम होना चाहिए, refined sugar कम होना चाहिए, refined आटा कम होना चाहिए, right? Saturated fat कम होने चाहिए. But the fifth principle is a very important principle, which is now science, modern science is realizing that and investing heavily behind that, which is the principle of personalization. कि अभी तक हमारा न्यूट्रिशनल गाइडेंस वाज पॉपुलेशन लेवल गाइडेंस, 2000 कैलोरी डेली खाना चाहिए, उसमें से 55% आपका कार्बोहाइड्रेट से आए, 30% फैट से आए, 15% प्रोटीन. सो ऐसे टाइप का एक गाइडेंस हो जाता है, विच इज अ पॉपुलेशन लेवल गाइडेंस. अगर फूड इज मेडिसिन चाहिए तो वो पर्सनलाइजेशन में जाना पड़ेगा. और वन ऑफ द फर्स्ट पर्सनलाइजेशन फ्रेमवर्क्स, राइट, इन द हिस्ट्री ऑफ human diet was in Ayurveda, where they proposed the Prakriti Dosha mapping, right? चरका संहिता में उन्होंने about 200 questions पूछे थे कि ये 200 phenotype questions, no, हमारा anatomical features पे, हमारे physiological characteristics पे, हमारे behavioral characteristics से, we can cluster people into prakritis, no, जिनको हम वाता पित्ता कफा बोलते हैं, VPK. And not only that, these were then correlated with if you have this kind of a prakriti or a phenotype or a body type, then you are more susceptible to these kind of diseases. Therefore, you should eat more of these things and less of these things. Almost 600 plants को उन्होंने food type किया था, map किया था इन दोषास के साथ, और फिर recommendation algorithm लिखा था कि ये body type के लिए ये food खाना चाहिए. So it's a very advanced framework, I think very interesting framework, which needs to come in. This personalization aspect needs to come if you really want food is medicine. मैं इसके साथ अभी रुकता हूँ. Thank you so much, Dr. Gurmeet ji, for that wonderful insight that you shared with us. And now I'll ask you, Dr. Anant, naturopathy की अगर बात करते हैं तो चिकित्सा की बात करते हैं. अभी डॉक्टर गुरमीत ने बात की चरक संहिता की, तो आप किस तरह के उपाय बताएंगे या किस तरह की आप खाने की बातें हमसे शेयर करेंगे नेचुरोपैथी की, जो आपने पर्सनली देखी हैं कि वो इफेक्टिव हैं? क्योंकि आज की डेट में अगर हम और आप सभी बात कर रहे हैं तो अगर गूगल चार्ट्स पे कुछ भी वायरल हो रहा है तो वो है वेलबींग, और वो है हेल्थ, और वो है पैंडेमिक, व्हाट शुड आई ईट, व्हाट शुड आई नॉट ईट, व्हाट इज योगा, व्हाट इज नॉट योगा. There's so many forms that have come of yoga also in recent times that I was amazed to find. Aerobic yoga, beer yoga, all these kind of yogas. Yoga is an essential part of India's heritage. And इस yoga day पे जब हम बात कर रहे हैं, we need to align it to food, and that too to India's food. मैं बात कर रही हूँ भारत की सांस्कृतिक सभ्यता की, जो हमारी सतरंगी सभ्यता है, जिसमें हर इलाज दिया हुआ है, हर बीमारी का इलाज दिया. और नेचुरोपैथी के बारे में आप बताएं. योग के बारे में बताया. आज योग के नाम से अलग अलग प्रकार के योग, जुम्बा योगा, वो योगा, ये योगा, मतलब जिसका विकराल रूप सामने आ रहा है, तो वो कम होना चाहिए. इसीलिए इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन देश के लगभग 500 डिस्ट्रिक्ट्स में हम प्रयास करें अष्टांग योग, यम नियम से स्टार्ट होकर ध्यान तक हम इसको ट्रेनिंग देने का काम. अभी लगभग हमने 1 महीने के अंदर 6000 लोगों को हमने योगा वॉलंटियर का जो बेसिक योगा है वो सिखाने का प्रयास हमने किया है. और हम हर साल नेचुरोपैथी डे के उपलक्ष्य में भी अवेयरनेस अबाउट दी डाइट, फूड which is acidic food, which is alkaline food, which is good for the health. Just recently, I went to one COVID center in which naturopathy treatment, one doctor has given naturopathy treatment, and he has given purely naturopathy treatment and 80% of diet therapy. Through that diet therapy, they become perfect, fit and fine. That personally I have seen. Even Jitendra Arya ji also has many patients. He has experience of the around 40 years. हमारा नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल बालाजी निरोगधाम है, वहां पर कंटिन्यूस 70 to 80 पेशेंट हमेशा रहते हैं. वहां पर हम मैक्सिमम प्रयास करते हैं रॉ डाइट. हमारा जितना भी भोजन है, जो भोजन हम ग्रहण करते हैं
भोजन का मेन उद्देश्य क्या है? शरीर को पोषण देना, शरीर को पोषण करना। तो पोषण के लिए जो आजकल का जो फूड है उससे मच मोर बेटर है रॉ डाइट। अपने भोजन में एटलीस्ट 40 to 50% रॉ डाइट होना चाहिए। उसी से शरीर की शुद्धि भी होती है, शरीर के अंदर जो टॉक्सिक मैटर है वो बाहर जाते हैं, अलग अलग माध्यम से बाहर जाते हैं। तो मैं यही एडवाइस करना चाहूंगा कि हम सब हमारे भोजन में 40% to 50% रॉ डाइट, अंकुरित सलाद और इस प्रकार का या बॉइल्ड सब्जी इस प्रकार का लेना चाहिए। उससे शरीर या शरीर का स्किन है, हर प्रकार के बातें परफेक्ट होते हैं। और नेचुरोपैथी में हम इसी फूड को मेडिसिन के रूप में प्रयोग करते हैं। और मैं इतना ही एडवाइस करूंगा कि ऑल शुड टेक मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ रॉ डाइट इन फूड्स। थैंक यू। थैंक यू सो मच। डॉक्टर आर्या, आपसे जानना चाहूंगी, डॉक्टर अनंत ने इम्यूनिटी बूस्टिंग की बात की, क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरह की इम्यूनिटी बूस्टिंग आपको लगता है प्रोडक्ट से होती है? नेचुरोपैथी पे आपने इतने साल से रिसर्च करी है। Only food can bring immunity. Only food. जी Because your body is a very wonderful self-organized system. जी And there is a body language and body intelligence. जी The nature cure diet. I think I don't want to put up in even small box of nature cure diet. I should mention, means I believe that the right diet. The right diet is what? It's an alkaline diet. Why? Your blood nature is alkaline. Your tissues are nature is alkaline. Your bone marrow's nature is alkaline. And look, all diseases are induced due to acid formation in the body. When acid increase in the body, that acid brings disease. So all diseases, even arthritis, so acid deposits in the joints in the form of, in the name of uric acid, in the name of uric acid. So you just name it, arthritis, gout. So basically a bad gut. A bad gut. Yes, Acid bad gut. And to improve that, you need to eat lots of fruits. You need to eat millets. You need to eat gluten-free diet. You need to avoid, which is very important, sugar. Why? Because sugar decreases calcium in our body. The Absolutely. maximum, America is the highest user of sugar, and America is the highest problem of dental arthritis and psychological. पहले भारत में मेरे ख्याल से खांड यूज किया जाता था डॉक्टर। नहीं, खांड, गुड़, यस, गुड़ और खांड, जेगरी। पूरा अपना जो कोल्हापुर है, ये पूरा महाराष्ट्र का बेल्ट, पूरा का पूरा जेगरी प्रोडक्शन करता था आज भी। लेकिन आज क्या हो गया है कि अंग्रेजों ने ये सब शुगर फैक्ट्रीज लाए, so all on account of economical, more benefits, our farmers send that sugar cane in the factory. But still today also jaggery production is very high. I remember in olden days, every person, farmers and every person used to keep big dip of jaggery, means jaggery in big quantity. So India was different nation 20 years back. Here everybody was independent in the terms of health. Why? Because in our culture, health and culture means swasthya and sanskar, that was very nicely, it was very nicely intertwined in the lifestyle. So that's why, in front of our, house, every house, there was always basil plants, tulsi ka patta rakh, tulsi ka plants rakh dete. So that was our country.
So, here we need to again back to our roots. Even our diet was also the traditional diet. If you see, if you go to Gujarat, if you go to even Maharashtra, anywhere in the country, the traditional diet was quite balanced. People used to eat jawari ka bakri, chapati, millet ka chapati, makka ka chapati, ragi means nachni ka roti. So this was very appealing, and we need to again back to our original root when we talk about food, because Naturopathy that and that food. food was naturopathy and health. Yes. That our food was really This is very basically a balanced. health issue that we are talking about, and this initiative is also going out as a Eat Right India initiative, Yes, जहाँ पे हम एक बेहतर जीवन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हर right, विचार हर एक का, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बुजुर्ग हो, right, 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 खाने से काफी इन्फ्लुएंस होता है। डॉक्टर, right. यहाँ आपसे बात करूंगी। आप एक इनोवेटर भी हैं, एक इन्वेंटर भी हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस बात से सहमत हैं जो अभी डॉक्टर आर्या ने करी कि मिलेट्स और इस तरह रॉ फूड हमें लेना चाहिए? व्हाट आर द काइंड ऑफ डाइटरी प्रोडक्ट्स एंड सप्लीमेंट्स एंड फूड हैबिट्स दैट वी नीड टू कल्टिवेट टू सी अ बेटर इंडिया एंड ऑप्टिमम न्यूट्रिशन इन इंडिया? तो डाइट के मामले में जैसे मैंने बोला कि पहली चीज तो है कि बैलेंस चाहिए, और बैलेंस में खाली मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एक तरीका है बैलेंस का, दूसरा है रसा। यू हैव टू मेक श्योर दैट ऑल द 6 रसास आर देयर ऑन एवरी प्लेट। हर एक का एक फंक्शन होता है, राइट, इंपॉर्टेंट। जैसे कि अगर आपको मिनरल का एब्जॉर्प्शन चाहिए तो नींबू ऊपर डालना ही पड़ेगा आपको। तो ठीक तरीके से द प्रैक्टिसेस हैव टू बी, द प्रिंसिपल्स ऑफ फूड एंड द प्रैक्टिसेस ऑफ फूड हैव टू बी राइट। हम लोग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस नहीं फॉलो करेंगे तो एनी एंड एवरी फूड इज जंक फूड। अगर मैं जस्ट चरका संहिता का मेंशन किया था, तो उसमें नित्य सेवनीय आहार करके which is things that you can have on a daily basis. There are only 11 things, right, which he says that in that book which can be उनमें से कुछ जो मुझे याद है। एक तो राइस, शॉर्ट वेराइटी ऑफ राइस है, शॉर्ट अर्ली मैच्योरिंग वेराइटी ऑफ राइस है, शास्त्रिक शाली राइस बोलते हैं। एक व्हीट गोधुमा, एक उसके बाद आमला, right? The only fruit that he mentions on a daily basis is in the book is in the Samhita is amla. And then there is milk, there is dalon mein mung dal, right, which is the mung dal, right? That's the only one which could be had daily. What does this mean, right? कि ये चीजें, और बाकी चीजों में हनी है and अंतरिक्ष वाटर और मीट भी लिखा है। I mean, one of those 11 things the meat based. So ये 11 चीजें along with milk and ghee, ये 11 चीजें बनती हैं। तो ये ऑन अ डेली बेसिस खाया जा सकता है, और मीट एरिड एनिमल्स का, नॉट एनी एनिमल। तो ये 11 चीजें डेली बेस। उसका ये तात्पर्य क्या निकलता है कि दीज आर थिंग्स दैट यू कैन हैव वेरी फ्रीक्वेंटली। इट्स नॉट दैट बाकी चीजें मत खाओ, बट बाकी चीजें मेक श्योर यू आर रोटेटिंग देम। आपको भिंडी अच्छी लगती है तो ऐसे नहीं हर रोज भिंडी खा रहे हैं, चने अच्छे लगते हैं तो हर रोज चने, जो भी, राइट, वो तकलीफ होगा, बॉडी में स्ट्रेस बिल्डअप हो जाता है। बाकी चीजें आप रोटेट कीजिए, पर ये 11 चीजें ज्यादा फ्रीक्वेंटली में खाएं तो नुकसान नहीं होगा। So that's the emphasis of Ayurveda. Ayurveda में एक बहुत interesting story है, मैं जो 1 मिनट लूंगा बताने का। There's a very famous student of Ayurveda called Jivak, right? He used to live in the times of Buddha, and उनका जो final exam था, तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उनको आगे भेजा। He then became such a great student, the topper of his class. He became the physician of the king. He was the physician of the king, Ajatashatru, as well as Buddha, right? दोनों के वो personal physician थे। So his final exam, his professor sent him out कि you go and bring me something which is useless, right? So Jivak went out and spent months, and he came back बिल्कुल dejected and almost crying. मैं तो fail हो गया, मुझे कुछ मिला ही नहीं जो भी useful था, right? So sorry I failed you, yeah? So professor बोले that's the lesson that I wanted to teach, right? That there is nothing which is useless. What is important is to understand under what circumstances does that thing become useful. Everything has a use. So खाने में ऐसा कुछ नहीं है कि ये खराब है या ये अच्छा है, पर कब खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, किस चीज के साथ खाना चाहिए, किसको खाना चाहिए,
वो चीजें रूल्स उसके बहुत जरूरी हैं, which is what the traditional knowledge systems are all about. They don't say eat this and don't eat this. जो आजकल का कल्चर है ना, सुपर फूड क्या है और ये चीज खराब है, एलिमिनेट कर दो. There is no such thing. It is all under the context, right? Absolutely. और यहाँ डॉक्टर आर्या, मैं आपसे एक बात शेयर करूंगी. अभी हाल फिलहाल में मैंने किसी से ऐसी बातचीत करी और लाइव शो चल रहा था डीडी पे, और उन्होंने एक किताब खोल के दिखाई हमें, और जिसके अंदर 2009 में लिखा गया था कि फ्लू, एंड मैं किताब का नाम भूल रही हूँ, श्री एम जी के साथ बातचीत हो रही थी मेरे, जो पिछले साल जिनको पद्म भूषण मिला है. उन्होंने किताब खोल के दिखाई थी, उसके किसी पन्ने पे लिखा हुआ था कि फॉर फ्लूज एंड पेंडेमिक जो सबसे अच्छी चीज खानी चाहिए, और मैं चाहती हूँ ये मैसेज हर एक इंडियन को जाए, वो है अजवाइन का पत्ता. अब नीम का पत्ता सुना है, तुलसी का पत्ता सुना है, अजवाइन का पत्ता नहीं सुना. पर मैंने गई, आई वेंट टू द नर्सरी, आई लुक्ड एट दिस एंड द स्मेल इज आल्सो वेरी वेरी गुड, एंड I tried having that. So I believe this works. इसी तरह और क्या क्या चीज है नेचुरोपैथी में जो आप बोल सकते हैं कि हम इसको खाएंगे तो शायद कुछ ना कुछ इम्यूनिटी हमारी बूस्टअप होगी. अब विदेशों की अगर बात करें तो जैसे डॉक्टर गुरमीत बता रहे थे, they're all searching for these products, amla, honey, turmeric, anything that is Indian honey, Indian products, hing. They're all looking at all these things, with a very, very different view, and taking insights from our value systems, our traditional Siddha systems, our medicinal systems. क्योंकि जो सबसे बड़े इंडिया के बोगार जी जिनको कहा जाता है, that famous medicinal person, I believe he's also made, I don't know whether we can take this, we can see whether we need to edit it, but ये मैं आपसे बात करने के लिए कहना चाहती हूँ, इसमें सवाल में जोड़ना चाहती हूँ कि जो बोगार जी थे उन्होंने तो एक ऐसी मूर्ति बनाई है कार्तिकेय भगवान की, मुरुगन जिनको कहा जाता है साउथ में, और जिसे कहते हैं कि अगर उसका पानी ले लें तो कोई इलनेस पास ही नहीं आ सकती. ही सपोज टू बी द गॉड्स फिजिशियन, ऐसे कहा जाता है हमारी संस्कृति में. तो आप क्या कहेंगे डॉक्टर आर्या नेचुरल पदार्थों के बारे में? So during pandemic and now also, we have been asking to people, and we have been utilizing in our even ashram, in our health center, and that is lemongrass. And that is easily, even you can grow in your balcony also. जी. In 2006, I had written one small booklet, and in that I have written what you can grow in the balcony, and you can keep your health fit for whole family. So like lemongrass, just simple 6-7 pots are good enough to keep your health at very vibrant level. Even if you and live particularly, in a flat. Even if you live in right, even you live in the flat, right, way, because 6-7 small pots, and this which I selected after my study. So this like Gauti cha, they say in local language. So lemongrass, it's immediately it grows, and every day if you take out few leaves, again after 3 days you will find another leaves. it multiplies. It is wonderful, multiplies. It's wonderful for any kinds of flu, influenza, and for all sort problems. Secondary, there is even sadafuli. Means every time flowers it happens. So that sadafuri, in that we, you can say botanical name is Cathartus radius. So that also very good to prevent indigestion. Just you have to pluck 2 flowers, just eat, and your indigestion problem, particularly now in rainy season or any season, many times we victimize of that. Like that way, डेंगू जैसी बीमारियां भी आती है फ्लू में. Yes, और ये तो सदाफुली तो डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छी है. Of course, we'll talk later on diabetes. Then there is a like tulsi, there is a sabja that is called Ocimum basilicum. It's a more sabja, Ocimum basilicum. So this sabja is further extremely
full of odor, fragrance, and it's a kind of mind relaxing also. And it's a sister of basils, tulsi. So all the like same elements of tulsi, and again easily you can grow more easily, more faster way. Same way you can keep one small pot in that korfat, means aloe vera. So this aloe vera also you can have, so your acidity problems, your infection also, you can reduce. Then simple, we used to, give this hibiscus flowers uh, tea, means in 1 cup of hot water, you put just one flower and just you boil it. And that tea is also very soothing for cough, cold, sore throats. Then, of course, our this Ardusa, that is Adatota zelenica. Now, जी this Ardusa, now in Ayurveda, 1 dozen companies are making out of Ardusa different types of decoctions, means cough syrup. Like, their name is also, they put up Ardusa syrup. And all these syrup are available on even chemical shops. And that is all made of Ardusa leaves. Now that Ardusa leaves is also very widely available in India, and you do not need to treat some very special way. Just simply you put in the small stem, you put in the one spot, and you will find it can grow and it can be utilized. Even one leaf of Ardusa is good enough for whole family, not one person, because it's a very powerful odor and bit bitter also. So in today's time, you can make one kitchen garden or balcony herbal garden, or you can keep all this even dry leaves also, and you can utilize, and you can prevent yourself from this pandemic or flu type problems. Even forget pandemic, before that also, in this season or every season, children get cough, cold, even simple flu very frequently. So you do not need to rush immediately. You can utilize this one, and you can be all right within 2-3 days. So I firmly believe. But besides this, besides all these herbs, you have to control your diet. Means what way? You can utilize some non-mucus food. In naturopathy, there was one scientist in United States. His name was Berg. He had written one small booklet, mucus-less diet. What's that mucus-less diet? The diet which won't form so much mucus, diet which won't form so much, that kapha. So cough-less Kapha diet Pitta, also, हाँ, I know. kapha pitta. So cough is very common, particularly related with flu and all this influenza problems. So you can utilize sprouted green gram, sprouted gram, sprouted, बिल्कुल that even wheat also. Wheat also can be sprouts and can be eat. And then gluten level decrease. But mainly, all your pulses, mainly, you should sprouts, and you can eat either raw form or cooked form. other than That moong ki is dal, as also Dr. Gurmeet mucus. said, yes. Yeah, Dr. that is Gurmeet, mucusless diet. Yes. yes, yes. Dr. Gurmeet, यहाँ आपसे जानना चाहूंगी to add to what Dr. Arya has given us an overview on nutrition. I'd like to ask you, you spoke a little bit about intermittent fasting earlier. तो मैं यहाँ आपसे जानना चाहूंगी कि आपके समझ में और आपकी रिसर्च में जो लाइफस्टाइल पद्धति हम लोग आजकल देख रहे हैं, we just doing everything online, we're sitting and like couch potatoes, we're not really moving out, most of us, I'm talking of a general scenario. Do you think nutrition can be bracketed into 2-3 platforms or verticals, whatever we may call them? Say one for children below 15 years, the other from 15 to 35 years,
And then beyond that, how do you think eating habits should be developed? Because it's very important when we talk of eating right, is you can't keep, munching and snacking throughout the day. What are the basic perspectives on this, sir? So I think there are two things that you asked. So पहली चीज तो yes, I think food has to be personalized down to the individual level. But also जैसे आपने बोला, आयुर्वेदा में एक्चुअली ये एक डेकेडल कॉन्सेप्ट है फूड का, कि हर 10 साल के लिए सजेस्ट किया है कि क्या खाना चाहिए, बिकॉज यू आर पासिंग थ्रू डिफरेंट डेवलपमेंटल नीड्स. नो, एक बच्चे की फर्स्ट 10 years में नीड फर्क है, सेकंड 10 years में फर्क है, थर्ड 10 years में एज यू गेट इनटू द एडल्ट, ट्रांजिशनिंग इनटू एडल्टहुड, गोइंग आउट, तो आपकी नीड फर्क है, राइट. एंड देन 40 years पे, 50 years पे, तो हर 10 साल के लिए 2-3 चीजें सजेस्ट की हैं, एंड दे लिंक विद व्हाट आर योर नीड्स. नो, कहाँ पे आपको अपनी स्मृति, है ना, मेध फूड होना चाहिए, कहाँ पे थोड़ा बला होना चाहिए, मतलब बिल्डिंग चाहिए, किधर आपको रेजिलियंस थोड़ा इंप्रूव करना है, कहाँ डाइजेशन. सो थ्रू आउट ये एक गाइडेंस है जिसको हम डेकेडल गाइडेंस बोलते हैं. उसके लिए एक अलग सेशन करना पड़ेगा, बट दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ आयुर्वेदा, राइट, टू लुक एट डाइट, राइट. और the other part that you were mentioning was around, I think, just linking up with what Dr. Arya also said, कि हम अपनी बालकनी में क्या उगा सकते हैं. I think it is such a important concept, and there is a program that we run in our university called Healthy Gardens, Healthy Kitchen, Healthy Lives. Right? Lovely. ये जो गार्डन से किचन और लाइफ, ये कनेक्ट होना चाहिए एक होलिस्टिक तरीके से. And when we talk about balanced food, no, एक और एलिमेंट बैलेंस का आता है, विच इज फोरेज्ड एंड फार्म्ड फूड, राइट. कि फोरेज्ड है कि आप जो सीधा प्लग कर रहे हैं बाहर से, ना, उठा के पेड़ वगैरह से, जो लेमन ग्रास तोड़ रहे हैं, बालकनी में लगा हुआ है, राइट. ये तो ऐसी चीजें जो आप ग्रोसरी स्टोर में नहीं मिलेंगी, आपको वो सप्लीमेंट करना जरूरी है, क्योंकि उनमें ऐसी चीजें हैं जिनका अभी तक साइंस को पता भी नहीं है, राइट. हमें ठीक है, ये अच्छा है डील, तो अगर हम ये बैलेंस कर सकें, right, science will take forever, for a long time to get down to, because reductionist है, उसके अपने time scale रहते हैं, but science is acknowledging that our diet needs to be diverse, and diversity का एक principle ये है कि farmed food और foraged food को हम अगर mix कर सकें, 80-20 आप क्या खा रहे हैं आप देखिए, और उसके बाद में भी 3-4 ऐसी चीजें हैं हफ्ते में जो इंक्लूड करना शुरू कीजिए. 2 pots जैसे कि डॉक्टर आर्या ने बोला, उठा के अपने बालकनी में रख दिए, धीरे धीरे 2 से 10 हो जाएंगे, अलग अलग चीजें हैं, एंड यू हैव इट वंस इन अ व्हाइल, तो इट बिल्ड्स योर द डाइवर्सिटी ऑफ योर डाइट. बिल्कुल. एंड इम्यूनिटी बीइंग द बज़वर्ड. चलते चलते मैं आपसे जानना चाहूंगी, डॉक्टर आर्या क्या मैसेज देना चाहेंगे इस बार आप सभी बच्चों को ऑन बिहाफ ऑफ ईट राइट इंडिया? किस तरह बनेगा एक स्वस्थ भारत? अगर भारत की बात करें तो एक स्वच्छ भारत तो बन गया, स्वस्थ भारत के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहली बात बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, प्लीज वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड हैव फ्री फूड नरिशमेंट फ्रॉम द नेचर. बिफोर सनराइज देयर इज ओजोन in our atmosphere that is called O3. We are having oxygen O2. Ozone O3 is very powerful, and lungs, all alveoles would be also becomes fresh with ozone, and lungs capacity also improve. Besides that, when you get up early morning, it is called in our language Brahma Muhurat or Amrut Veda. Amrut means the ultimate nourishment. So that nourishment every student, every scholar should have. One should not deprive. You just sleep 2 o'clock, wake up 10 o'clock. Whether you eat badam, that badam goes to drainage, because you don't have power to digest badam. You have, money to buy badam, but your body has not got the right power to digest. You have got good food, but your body has not good capacity to digest, assimilate, and absorb. So, number one, every person, every aware person or person who really concerned for health, wake up very early, have breeze, have lots of pranayam, and thereafter you have
proper lime water, lemon water and honey, or lemon water, even simple lemon water would be further boosting to your immunity and to your whole body. You will recharge. You are how we very particular to charge our mobile. We need to charge ourselves. So to charging ourselves, wake up, have lime water, then go for yoga and have your breakfast like king. King means quality food. You are not supposed to eat so much or heavy, or no, you just eat little but quality. And what's quality? You can have soaked nuts, you can have fruits, you can have sprouts, you can have raw vegetables, you can have buttermilk, you can have fresh A2 curd. That is quality. So eat like king, morning breakfast like king, we used to say. And that is true. तो सुबह का नाश्ता आपका बहुत नरिशिंग होना चाहिए, particularly children, and जो जल्दी उठता है वही नरिशिंग डाइट वही डाइजेस्ट कर पाता है. It's not that. So life is very much interlinked. Where we are making mistake at large, everybody, we just see life in small box. Like one blind person, if you just show him, legs of elephants, he will say elephant is like Kamba. But so we should have holistic observation, holistic approach to the life. Now, holistic approach means what? You have to consider your food, your thought, because thought is mental food. You are good in physiological food, but mental food is garbage. You cannot attain health or happiness, even happiness. So for health, wealth, and happiness, we should have right physiological food, right psychological food, even right emotional food, right intellectual food. We are intellectual people. We need every time even some intellectual food also. Look, nowadays, due to our pandemic, people have become very dull and depressed and very much, frustrated. Why? They are not nourishing emotionally, intellectually, the way they used to earlier. So we have to look all these 5 types of foods: physiological, psychological, emotional, intellectual, and spiritual food. Spiritual food means it's not related with any, outer matter, clothes and all. Spiritual foods means keep the mental era open. Have openness. That is spirit. Spirit is always vast. Spirit is very subtle. It is So like the have cosmos. openness. Yes, completely. Like cosmos. You like be, and you are part of consciousness. So how you will touch? Aspect of the consciousness. Absolutely. Yes. So the larger consciousness would enter when you think about spirituality, when you think that I am open to the complete consciousness. So that consciousness would also enter within you, in you. So we have to see all 5 types of diet, with, of course, start with physiological food. Start with our diet, which we are eating. Of course, that is very important. But then we need to further have further journey. Then we will attain the perfect health, happiness, and blissful life. Absolutely. डॉक्टर गुरमीत, चलते चलते आपसे भी जानना चाहूंगी कि कैसे बनेगा, आपकी क्या कल्पना है स्वस्थ भारत की? We're talking of India at 75 in the Niti Aayog. Now there are documents coming out daily, and we've already started. Sorry, I said that. Cut it. डॉक्टर गुरमीत, आप क्या कहना चाहेंगे चलते चलते अबाउट स्वस्थ भारत? किस तरह की कल्पना करते हैं आप इंडिया एट 75 की, जो अब नीति आयोग ने एक प्रस्ताव पेश किया है? I think स्वस्थ भारत में diet will has a key role to play because it is preventive, right? And I think diet में 2 चीजों का ध्यान मैं just to add on to what I have said so far. एक तो कि there is no one quick fix. No, सब लोग एक चीज ढूंढ रहे कि मैं ऐसी क्या चीज खा सकूं. ऐसा किसी भी किताब में नहीं लिखा, ना किसी वेदर ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है मॉडर्न की कोई एक सुपर फूड हो गया जो आपने डेली खाया तो आपके सब प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे. द प्रिंसिपल्स ऑफ
moderation, the principles of balanced diet, 6 रस होने चाहिए, macronutrients होने चाहिए, the principle of diversity, the principle of personalization, ये बहुत जरूरी है. तो मेरे हिसाब से स्वस्थ भारत का मैं जो विजन आता है, मुझे एक पर्सनलाइजेशन का आता है और होलिस्टिक न्यूट्रिशन का आता है, जिसमें कि हम और इकोसिस्टम दोनों के बीच में एक बैलेंस है. और लास्ट ये बोलूंगा कि ये little steps every day can lead to big results, like over a lifetime. So don't get daunted by कि मुझे ये shift immediately इतना बड़ा करना है. आप छोटे छोटे कदम लीजिए, and but in the right direction. So that's all I will. और इसी के साथ मैं आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए आज. A big shout out and acknowledging our digital partners Mitro, and this program was powered and led by the one and only Herbalife Nutrition. We thank you so much for your support, guidance, and for taking India towards the FSSAI objective of Eat Right India. Let us hope to see a healthier and a better India. On that note, namaskar. Many thanks for joining.